Okay. So now we will start next question. For it, Ansu 9D. Ansu 9D. Yes, yes, sir. Read question number 18. How much momentum will a dumbbell belt of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. ठीक है. This question is related to the chapter gravitation. Gravitation chapter, next chapter is gravitation. This question is related to the gravitation chapter. So please learn here. The given quantity mass 10 kg and height 80 centimeter. Take the downward acceleration to be 10 meter per second square. Here we have taken acceleration is g. In the chapter gravitation, we will know that g is the acceleration due to gravity. When object move towards earth or move upward the earth, move from upward the earth, the downward velocity or upward velocity, then the acceleration of the object is called acceleration due to gravity. जब ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवार्ड्स में या अर्थ से एबव मोशन करता है तब उसका एक्सीलरेशन को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है. और सेकेंड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव. अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में होता है, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निगेटिव लिया जाता है, माइनस. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है इसलिए माइनस. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवार्ड्स में वर्क करता है इसलिए पॉजिटिव. तो कह रहा है कि momentum of a dumbbell of mass 10 kg transferred to the floor if it falls from the height of 80 centimeter. ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, अभी क्या होगा, u क्या हो जाएगा उसका 0. अभी जस्ट रेस्ट में, गिरने के ठीक पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में, u इनिशियल वेलोसिटी 0. और टकराने के समय तो उस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगा v, उस पर मोमेंटम निकलेगा m इंटू वी. u इज 0. वी हैव टू फाइंड v. फाइनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है. v फाइंड करने के लिए यहाँ पर सुटेबल फॉर्मूला, जैसे कि मोशन चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल हम लोग लेते हैं फॉर्मूला, सिंपल उसी पर आधारित ये फॉर्मूला है. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वहां लिखते हैं तो यहाँ a के जगह पर g हो जाता है, s डिस्टेंस के जगह पर हाइट हो जाता है. तो यहाँ पर सुटेबल फॉर्मूला हो जाएगा
ए के जगह पर जी, एसिलरेशन, लीनियर एसिलरेशन ए के जगह पर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाता है, और वहां एस डिस्टेंस के जगह पर हाइट एच ले ली, बाकी भी सब सेम रहता है। ये सुटेबल फॉर्मूला है हमारा भी निकलने, इससे हम लोग भी निकालेंगे। एट्टी बाय 100 के, ये 80 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए बाय 100 कर, समझे? 80 को बाय 100 कर दिए तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। जीरो 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 कैंसिल, वी स्क्वायर, और ये जीरो का स्क्वायर हट गया, इक्वल टू 2 इंटू 8 16, वी स्क्वायर इक्वल टू 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, v निकल गया। अब मोमेंटम निकालो, मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, मोमेंटम निकल जाएगा। फोर मीटर पर सेकेंड, फोर मीटर 10 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्टी केजी मीटर पर सेकेंड। नोट करो इसको। Okay, you have completed this chapter. Prepared this chapter. ब्लूप्रिंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, जो भी ब्लूप्रिंट वगैरह बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछोगे, क्वेश्चन को शेयर करो क्लास।
Now we will start the next chapter, gravitation. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में इंटर करेंगे. अभी इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे एक दो बच्चे रीड करेंगे. ठीक है. सो ओपन योर बुक चैप्टर ग्रेविटेशन and one or two student read today some parts of gravitation chapter, introductory part of this chapter. Anshu 9D. Yes, sir. Kindly read a paragraph of this chapter loudly. Yes, sir. In this chapter 8 and 9, we have learned about the motion of objects and force as the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object, the planets, and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. In this chapter, we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the condition for object to float in liquids. Done, sir. Okay, thank you. Mayank Kumar. Next, Mayank Kumar. Read a paragraph, Mayank Kumar. Yes, sir. Gravitation. We know that the moon goes around the earth. An object, when thrown upwards, reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both cases? He He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So, it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. Let us try to understand the motion of the moon by recalling activity 8.11. Activity 10 Activity 10.1. Take a piece of thread. Tie a small stone at one end. Hold the other end of the thread and whirl it round, as shown in figure 10.1. Note the motion of the stone. Release the thread. Again, note the direction of motion of the stone. A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude. Before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called the centripetal, meaning center-seeking force. In the absence of this force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. Okay. Right. Priya Kumari 9C. Yes, sir. Now read. 1 minute बचा हुआ है, read करो. The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line
motion, it is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? According to the third law of motion, the apple does not attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. Equation 9.4. The mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. In our solar system, all the planets goes around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. Sir, done. Okay, thank you. Priyaranjan, 9C. Inversal law of gravitational. Every object in the inverse attract the every other object with the force which of proportional to the product of their masses. The inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. Let's two objects A and B of the masses M and M lie at the distance D from each other of the show. In the figure 10.2, let's the force of attraction between two objects be F according to the universal law of gravitational. The force between two objects directly proportional to the product of their mass. That force mass into mass, and the force between two objects inversely proportional to the square of the distance between them. F 1 by d vector 2